हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम राइना जीनो, ब्यूटी कंटेंट क्रिएटर। एंड आज के वीडियो में मैं ऐश्वर्या राय का मेकअप लुक रिक्रिएट कर रही हूँ, विच इज़ फ्रॉम देवदास। ये है एग्जैक्ट मेकअप लुक जो मैंने रिक्रिएट किया है। आई एब्सोल्युटली लव इट। All the products that I will be using today on my face will be linked in the description box below. Don't forget to check it out. And now let's get right into the video. फॉर माई बेस मैं स्विस ब्यूटी का हाई परफॉर्मेंस फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और मेरा एग्जैक्ट शेड है 08 सन बेज। आई लव द शेड मैच। ये मीडियम टू बिल्डेबल कवरेज देता है एंड इट इज़ अ वेरी डूई फाउंडेशन। यू कैन सी हाउ ग्लोई इट लुक्स ऑन माई फेस। ऑल्सो बाय द एंड ऑफ द वीडियो मेरी स्किन बहुत ही ग्लास लाइक लग रही थी, विच आई रियली लव। ऑल्सो ये एक डूई फाउंडेशन है बट इट इज़ क्वाइट लॉन्ग लास्टिंग ऑन द skin and it feels very comfortable also. You could see that I have some psoriasis patches on my face right now and how flawlessly this foundation just covered everything. Next, I'm using the Swiss Beauty Liquid Concealer in the shade 01 Warm Sand, and I'm using a shade that is closest to my skin tone to cover my dark circles, and you can see it does such a great job. In just a few seconds my dark circles are literally gone. ये अगेन एक मीडियम टू फुल कवरेज कंसीलर है, ज़्यादा क्रीज नहीं होता है अंडर आइज़ में, विच आई रियली लाइक एंड इट्स लिटरली वन ऑफ द बेस्ट ड्रग स्टोर कंसीलर्स दैट आई यूज़. फॉर द प्राइस यू आर पेइंग द क्वालिटी इज़ रियली गुड. Now for my face, I'm using this blush palette which has some matte and shimmer shades. I'm taking this warm peachy kind of a shade for my cheeks. It's a matte blush, and again I was blown by the formula. It was so like moderately pigmented. Blushes, when they're too pigmented, they make you look like a clown, so it has to be moderately pigmented so that you can build the color up as much as you like. फिर मैं ये शैम्पेनी गोल्ड कलर अपने फेस के सारे हाई पॉइंट्स पे लगा रही हूँ फॉर दैट एक्स्ट्रा शाइन एंड ग्लो. दिस ब्लश पैलेट इज़ द ओनली प्रोडक्ट दैट यू नीड फॉर द फेस्टिव सीजन बिकॉज इसमें इतने सारे ऑप्शंस है टू चूज़ फ्रॉम ब्लशेज एंड हाईलाइटर्स. देयर आर सो मेनी शेड्स एंड देर ऑल सच गुड क्वालिटीज़. Now for my eyes, I'm using this Swiss Beauty Ultimate Eyeshadow Palette in the shade 04. I love the warm colors that this eyeshadow palette has, and today's eye look has to be very warm. So I'm using this burnt orange kind of a shade on the outer corners of my eyes and also dragging it in my crease. फिर मैं रस्टी ब्राउन कलर अपने अगेन आउटर कॉर्नर पे लगा रही हूँ जस्ट फॉर दैट डेप्थ एंड डेफिनेशन, और फिर से एक फ्लफ़ी ब्रश के साथ इसे ब्लेंड कर रही हूँ. These eyeshadows blend like butter. They're so smooth, so easy to use. Even if you're a beginner, you will not have any trouble in doing good eyeshadow looks. I'm taking the same colors on my lower lash line as well just to balance out the eye look. Now for my lid, मैं ये golden copper shimmer shade अपने first half of the eyelid पे लगा रही हूँ. Generally shimmer shades brushes के साथ इतना intense नहीं लगते, but ये इतना pigmented shade है कि मुझे इसे अपने finger से apply करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. But since I was not satisfied with the shade of gold, I used this gold highlighter from the blush palette and I just used it like an eyeshadow topper, and now it looks exactly like the reference. For eyeliner, I'm using the Color Me Bright Sketch Eyeliner in the shade Black Beauty. Aishwarya Rai has worn really beautiful, bold, black winged eyeliners throughout the movie, and I really wanted to recreate that. And this eyeliner is just perfect to do that. इसकी टिप इतनी थिन है कि आप बहुत easily एक winged eyeliner create कर सकते हो. अगर आप एक beginner हो तो भी आपको कोई problem नहीं होगी. And you can see I was so impressed with the eyeliner that I created. Some boldness was missing from this eye look, so I took this very dark brown eyeshadow and I'm just lining my waterline with this. To finish off the eye look, I'm using the Precision Thickening Long Lash Mascara and I'm applying it on my top and bottom lashes. I love the length and volume that this mascara gives. I love the wand that it has. Definitely a must try. Now finally for the lips, मैंने एक बहुत ही beautiful lip combo create किया है. I'm first lining my lips with the bold matte lip liner in the shade Cherry Brown. This is my most favorite lip liner from Swiss Beauty. Then I'm using the Hold Me matte liquid lipstick in the shade Lusty Rusty, and I'm just using a tiny bit of this lipstick just to cover any pigmentation on my lips. And lastly, I'm using the Plump Up Wet Lip Gloss in the shade Deep Desire. This is again one of my most favorite lip glosses from Swiss Beauty. I love this formula. And I guess I've managed to get a very similar lip look to Aishwarya Rai. वो आइकॉनिक रेड बिंदी के लिए मैं ये लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड रेड चिली, और इसे लिप लाइनर के टिप पे लगा रही हूँ ताकि मुझे एक परफेक्ट सर्कल मिले.
and this is the final makeup look. Let me know what do you guys think of this look in the comment section below, and मैंने जो भी products use किए सारे description box में linked है, don't forget to check it out. Also please don't forget to hit that like button, subscribe to the channel and hit the bell icon besides it to get notified whenever we upload a new video, and I will see you guys in the next one. Bye.